हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आज होली क्रॉस स्कूल दोनार दरभंगा में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी 2023 का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में छात्राओं की कलात्मक एवं वैज्ञानिक सोच की झलक खूब दिखी। छात्राएं इसके माध्यम से भारत के गौरवशाली संस्कृति, इसके इतिहास को उभारने की पूरी कोशिश करती नजर आईं। इस कला के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और विकास को सुनिश्चित करना था। भारत की संस्कृति विविधता और धार्मिक एकता का प्रतीक है। इस प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि स्क्वाड्रन लीडर अर्पण मुखर्जी, विशिष्ट अतिथि सिस्टर इलसिट अम्पट का स्वागत स्कूल बैंड ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य सिस्टर जैंसी मैथ्यू द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वर्ग प्रथम से 12वीं तक के छात्र छात्राओं द्वारा विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी में व्हील और एक्शन, पेरिस्कॉम, वाटर बबल, वाटर प्योरीफायर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कूलर, वैक्यूम क्लीनर, रॉकेट लॉन्चर, मानव हृदय, प्रदूषण नियंत्रण, हाइड्रोलिक चेयर, बायोगैस प्लांट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, वायु ऊर्जा, मानव जीवन में विज्ञान का महत्व, एलपीजी गैस बनाना, बिहार की लोक संस्कृति, तिब्बत की लोक संस्कृति, हिंदी साहित्य का वर्गीकरण, अनेकता में एकता, नारी सशक्तिकरण, सिक्किम की लोक संस्कृति, हमर मिथिलांचल आदि मॉडलों नमूनों को प्रस्तुत किया गया। अभिभावकों ने बच्चों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया। मुख्य अतिथि स्क्वाड्रन लीडर अर्पण मुखर्जी ने बच्चों के मनोबल को खूब उत्साहित किया और कहा कि इस तरह का कार्यक्रम विद्यालय द्वारा कराने से बच्चों में विज्ञान एवं कला के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट विधि द्वारा अधिगम का आगमन होता है। इससे बच्चे अपनी कौशल एवं दक्षता को सृजनात्मक रूप से सही उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कार जरूरी हैं। बच्चों ने अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को दर्शाया जो हमारी पहचान है, अस्मिता है। इस कला के माध्यम से साहित्य को भी पूरी तरह से चिन्हित किया गया। Welcome to all of you. It's indeed a day to honor all of us to have in our midst Squadron Leader Arpan Mukherjee, Air Force Station, Darbhanga, Senior Education Officer, a distinguished scholar and an administrator of eminence. I, on behalf of the entire Holy Cross family, Darbhanga, extend a very warm and cordial welcome, dear sir. It's my privilege to welcome Reverend Sister L.C.G. Amma, the Education Coordinator of the Northeast Province, Punjab. She is not a new face to the people of Darbhanga. Sister L.C.G. served Holy Cross School as principal from 1986 to 2000 for 14 years and took the institution to greater heights. Hearty welcome, dear sister. On 18 August 1969, under the prime ministership of Srimati Indira Gandhi, it was renamed as the Indian Space Research Organization, ISRO, with me as its first chair.
Prime Minister was not there with the scientists at that time. So Murphy's law works in strange manner. Okay, he was a fraud actually. So one round of applause for all the scientists. Okay, all of us come to the right. A big round of applause for the scientists, please. So the moral of the story is that it is a difficult job. So what the scientists are doing, we only see on television, study about it a bit, but the actual journey to fame is not so glamorous as it appears to be. So you must all keep up the hard work, the good work. You are blessed to have a beautiful campus in a town that is Darbhanga. This is of course one of the best schools of the city. So you are all blessed. I'm really impressed with what I see. I would love to go around the campus a bit. Once again, thank you so much for inviting me. And we have hosted the students of 10th and 12th at the Air Force Station to show the operations of flight. Some of them I can see, they're here. Who all went to the station? Class 12 and some 10 students, right? Yeah. This industry vacuum is present in the language. This was made by Ananya Arya And I Raghunash. It is a type of evaporative cooler that preserves the vegetable for a longer period of time. And as we know that poor farmers are in majority in India who cannot afford cold storages or refrigerators. So we have developed this technology where the poor farmers can also be privileged to store their vegetables so that they can have a good share in the market. So here it is a 2-brick layer wall, and between that there is a cavity which is filled with wet sand. When the wet sand evaporates, it creates a cooling effect inside the chamber, and as you can see, we have stored these vegetables and fruits inside it, and here is the temperature, -0.6 degrees Celsius, which is perfectly suitable for storing the fruits and vegetables. Very good. Solar storms and it protects our satellites and provide the power grid from its effects. We hope that it will also touch the success as Chandrayaan 3 did. Hi, Cynthia. Today I'm still from Sajina and such. I'm still model of hydropower lab, which we are going to show how it works and how it produces electricity. Typical of transportation and communication, and the trade and the losses will not be felt that much in compared to right now we face today in today's world. What technology is Smart building. Hence, we all decided to show the glorious past and the rich history of Bihar through this model. So, we would like to represent a poem through this. किसी ने क्या खूब कहा है, जहाँ की पावन चिकनी माटी, जहाँ पूजी जाती हर नीर की घाटी, जहाँ माँ सीता का जन्म हुआ, जहाँ जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। हाँ, गर्व है हमें कि हम उस बिहार से। This is Nalanda University, the most famous university and the very famous university which imparts knowledge. And after the burning by the Bakhtiyar Khilji, the condition of the Nalanda University. small crux, what you have done, okay? Hydraulic lift and
So this is a water cleaner which collects floating garbages before it sinks into the ground, and it collects the non-garbages. The main purpose of this water cleaner is to clean the garbages from the river, falls, etc. That you have seen now, one hydraulic working crane was there. Acha, crane. I have been there before. There is much more to unveil. The Sisters of Mercy of the Holy Cross. Yesterday, we began to teach the orphans to read and write and train the bigger ones in ordinary. Just to tell you one or two words what you are doing. I think I'm getting a pick up. The Bluetooth music zone. First thing I saw when I came to school was a poster outside, like Harry Potter poster or something. This was Tribizar tournament which was held in the 4th grade on Harry Potter. Later converted into Horcrux by Voldemort. The head of the house was Pomona Sprout. Now we have prepared a small activity for you to do. This activity is based which later on deals with future tradition. Now I would request you to choose a color. This is having a symbol of peace, which makes you for the teacher. Earth resources have animal resources, soil resources, and forest resources, and oil resources, and water resources, and coal resources, and solar energy resources, and wind resources. Animal resources have animals, and soil resources helps the plants to grow, and forest resources have plants. Forest resources give oxygen and carbon dioxide. विशेष चर्चा का विषय है आज ये बच्चों को नहीं समझ पाते हैं तो हमने सब चीज़ों के माध्यम से दर्शाया सर यहाँ पे बहुत सारे लोगों का गलत भी हुआ पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने आगे बढ़ के की लड़कियों के माध्यम का नाम रोशन भी किया है और हमको कोई कानून बनाए गए जिसके माध्यम से लड़कियों करके महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं बस वही दिक्कत है आज यहाँ प्रदर्शनी लगी है होली क्रॉस स्कूल में और सभी कक्षा के बच्चियों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया है। बहुत क्रिएटिव प्रेजेंटेशंस प्रोजेक्ट्स बनाए हैं लोगों ने, साइंस के भी, आर्ट्स के भी, नेचर से संबंधित जितने जागरूकता हैं, जो महिलाओं से संबंधित जागरूकता अभियान को लेकर भी बनाया है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, जो क्रिएटिविटी बच्चों में है उन्होंने यहाँ पर दिखाया है और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चियाँ अच्छा करेंगी अपने अपने क्षेत्र में भविष्य में। और प्रिंसिपल मैडम को खास करके मैं धन्यवाद देता हूँ इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। As you
temperature. Water produces electricity. Sea creatures also depend upon water. Plants make food with the help of water. Without water, there is no concept of life on the earth. So, save water, food, our precious life. Explain karo. Rain is the water that falls from the clouds. Rains a lot in tropical areas in our planet. Children enjoy in rain and jump in mud pits. Rain makes our environment more clean and beautiful. Good morning, my name is Sadia. My companion is Manika and Aksa. Our project is volcanic eruption. Now, Aksa tell more about it. Now the question is, what is a volcano?